न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। बिजनेसमैन ग्रुप के वाइस चेयरमैन हारून फारूकी, अंजुम निसार और केसीसीआई के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने उनका इस्तकबाल किया। इजलास से खिताब करते हुए केसीसीआई के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने कहा कि सिंध और न्यूयॉर्क को सिस्टर स्टेट्स करार देने का आइडिया एक दिलचस्प तस्वुर है, जिससे तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में बाहमी शराकतदारी के मौके मिलेंगे। Recently, to establish a sister state province between Georgia and Sindh, which was a historic step for promoting multiplicated sister state ties. Sindh is in Pakistan's second largest province. It's a province capital Karachi, which is an economic growth engine of the country. Sindh's competitive advantage that resets on its strategic locations, which has major seaport, expensive industrial infrastructures, a 350 kilometers long coastal line, and larger agricultural, natural and industrial base. It has also third coal 185 billion tons reserves, which is one of the largest in the world. न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस ने कराची को पाकिस्तान का न्यूयॉर्क करार देते हुए कहा कि कराची की तरह न्यूयॉर्क भी दीगर स्टेट्स को सपोर्ट करता है और बाकी तमाम एरियाज के खसारे को पूरा करता है। बाहमी मुआहदे तय करने के लिए मुजवजा टास्क फोर्स के लिए केसीसीआई नामजदगियां दे। New York fills the deficits of other areas and we receive less than other states as a result. They are an economic engine. And as you know, the reason why New York is the economic engine is because we are the capital of the world, and the immigration from Pakistan, from so many other countries, the entrepreneurial spirit of New York is what has kept us alive and made us such a vibrant city economically. But we have many issues economically, so does Pakistan. And we are here using a very unique concept to promote mutual benefit to both Pakistan and our country. And the concept is that, as you all know, as business persons, perceptions and confidence must be produced, must be present in order for businesses to prosper, in order for countries to prosper. Isolation is not good for business. Isolation is not good for countries as well. इजलास में केसीसीआई के सीनियर नायब सदर अल्ताफ ए गफ्फार, नायब सदर तनवीर अहमद बारी और मैनेजिंग कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास के अख्ताम पर इफ्तिखार अहमद शेख ने फिल रामोस को यादगारी शील्ड और फूलों का गुलदस्ता पेश किया।